औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Aamir Mairaj and you are watching Concept Coaching. व्यूअर्स, आज लेक्चर नंबर 67 है और एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड m if the sum and the product of the roots of the following equations is equal to a given number। और नंबर क्या है? that is lambda। वो lambda है तो lambda के इक्वल हमने इसको कर देना। this is lambda and the equation is 3m plus 2m plus 3 into x square plus 7m minus 5 into x plus 3m minus 10 equal to 0. So we have to find the value of m. So for this we have to solve this equation. So first of all we suppose that let alpha and beta are the roots of the given equation. Then sum of the roots sum of the roots this equal to minus, this is alpha plus beta, alpha plus beta, and this equal to minus b over a. This is minus b की value 7m minus 5 over a की value 2m plus 3. So ये यहाँ पर हाईलाइट कर लें अगर आपको इसमें मुश्किल है तो दिस इज a, ये a की वैल्यू है, दिस इज a, दिस इज b and this is c. So this is the sum of the roots. Now product of the roots, product of the roots this equal to alpha beta and this equal to c over a, and this will be equal to c over a. This is 3m minus 10 over 2m plus 3. This is c over a. So इसको हम जरा उठा के तो इक्वल कर देते हैं इसके। So now as per given condition of the question, as per given condition of the question, that alpha plus beta sum of the roots is equals to product of roots alpha beta and this equal to lambda. So we'll put the values. This implies that sum of the roots alpha plus beta is equals to alpha beta. Now put the values. यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेते हैं फिर इसको ऊपर मूव करते हैं। That is what is alpha plus beta? This is minus 7m minus 5 over 2m plus 3 and this equal to 3m minus 10 over 2m plus 3. So इसे अब सॉल्व करते हैं।
नो दिस शुड बी कैंसल्ड, ये कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस शुड बी कैंसल्ड। सो वी आर लेफ्ट विथ दैट -7m माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे +5, दिस इक्वल टू 3m -10। So this implies that -+5 +10, 10 को मैं इस साइड पे ले गया हूं, इस 10 को यहां से उठा के तो मैं इस साइड पे ले आया, लेफ्ट साइड पर, और इस -7m को यहां से उठा के तो मैं इधर ले आऊंगा। सो वी गेट दिस इक्वल टू दैट 3m, ये प्लस हो जाएगा +7m, so this is 15 equal to 10m, and this implies m equal to 15 by 10, so m will be equal to 5 से कैंसिल कर दे 3 by 2, तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है 3, 5 3 = 15, 5 2 = 10। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं, येलो बॉक्स में कर लेते हैं इसे। दिस इज द वैल्यू ऑफ m, दिस इज 3/2। तो थोड़ा सा बॉक्स को सिलेक्ट करके इसको जरा ऊपर कर देते हैं। सो दिस इज 3/2। तो ये हमारे पास m की वैल्यू देती है। द क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। So viewers, thank you very much। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।